Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. This topic today we are presenting is bamboo fiber. The topic is presented by K Group. I am Usama Khalid from number 186. Let's start the presentation. Here I am Said Nasir Hussain and I am going to start my presentation. So my presentation topic is bamboo fiber. So let's we introduce bamboo fiber. Bamboo fiber are all cellulosic fiber extracted or fabricated from natural bamboo, but they are very widely. They are generally synthetic rayon made from cellulose extracted from bamboo. Bam- Bamboo textile. Bamboo textile is or any cloth, yarn, or clothing made from bamboo fiber. While historically used structural fibers such as bustles and the ribs of corsets in the recent years. Different technologies have been developed that allow to use for textile application. And bamboo fiber. What is the structure of bamboo fiber? Fiber has various micro gaps which make it softer than cotton and increase at moisture absorption. They are elastic, environmental friendly, and biodegradable. So the properties of this fibers is the fiber is bacteriostic, antifungal, antibacterial, hypoallergenic, hydroscopic, natural, deduce, resist, and resistance against ultraviolet light. Furthermore, it is highly durable, stable, and tough, and has substantial tensile strength. And the origin of this fiber, the earliest patent involving these material go back to 1864 by Philip. Its origins lie in Asia. In recent years that the right technology has applied to bamboo fiber to turn into fabric on wide scale, and the history used in general goes back thousands of years. But fabric is much more modern invention. This is the map uh, of bamboo fiber where bamboo is produced. My name is Tayyib Wahid and my roll number is 178. So I am going to start my first topic, which is chemical composition of bamboo fiber. Bamboo is a natural lignocellulosic fiber obtained from bamboo culm. Its chemical composition is similar to bast fiber, so its structure and properties are often compared with other bast fibers such as flax and jute. Besides, it belongs cellulose one crystalline structure like that of cotton and rami. Though bamboo fiber is like a bast fiber, it is often misinterpreted as a bast fiber. The major chemical constituents of bamboo fiber are cellulose, hemicellulose, and lignin, according to over 90% of the total bamboo mass, and minor constituents being soluble polysaccharides, waxes, resins, pigments, tannins, proteins, and ash, etc. In their study, it is also found that bamboo culms consist of 60 to 70% hollow cellulose. Bamboo fiber contain more than 70% cellulose. Generally, the cellulose amounts such as hollow cellulose to more than 50% of the total chemical constituents. Non-cellulose substances like pectin and hemicellulose influence the fiber properties such as strength, flexibility, moisture, and also density significantly. So, my next topic is structure of bamboo fiber. Bamboo fibers have a hierarchical structure in which cellulose microfibrils reinforce the intertwined hemicellulose lignin matrix. Linear chains of glucose with orderly hydrogen bonds form the crystalline regions of microfibrils, while irregular hydrogen bonds create the amorphous regions. The cross section of these microfibrils is either rectangular or hexagonal.
The vascular bundles in parenchyma matrix are surrounded by supporting fibers which are known to be the source of remarkable mechanical properties of bamboo. The most abundant carbohydrate in bamboo fibrils is cellulose with a volumetric percentage around 73.83%. Cellulose microfibrils are formed by assembling linear chains of aldehyde sugars, often referred to as glucose molecules. If the hydrogen bonds between the hydroxyl groups form in an order, highly ordered regions are formed, which are crystalline regions. However, if the random hydrogen bonds formed, disordered regions are formed, which are amorphous regions. In this slide, we have to cover two topics. The first one is surface morphology of bamboo fiber, and the second one is cross-sectional shape. So let's start with surface morphology. First of all, we have to know that what is morphology. Morphology means structure or shape of any object. The morphological structure and properties of a natural bamboo shell fiber are analyzed with the help of research work done on it. The fiber has a slight natural convolution morphological structure with a rough surface. The crystalline degree of fiber is about 68.2%, which is twice higher than that of cotton. Now we discuss the cross-sectional shape of bamboo fiber. It can be seen that cross-section of a single bamboo fiber is round with a small round lumen. The gaps, cracks and grooves like capillary, as you can see in figure, are responsible for an instant moisture absorption and evaporation of bamboo. Due to these properties, bamboo fiber begins to degrade at about 345 degrees centigrade, and there is a large mass loss in the range from 410 degrees centigrade to 470 degrees centigrade. Most of the bamboo fibers have multi-lamelate cell walls with various layers. The width and length of a single bamboo fiber are 6 to 12 micrometer and 2 to 3 millimeter respectively. Thank you for listening. Bamboo fiber growth stages. In plant biology, fibers are defined as individual cells with certain parameters. Fibers also grow like other cells. First, we have fiber indentation, then we have elongation, and at last, cell wall thickening. In the process of fiber indentation, fibers originates from the meristematic tissues which are either primary or secondary. On that basis, we call our fibers primary fibers or secondary fibers. Primary fibers originates from primary meristematic tissues which are procambium. These are located at the very apex of root and shoot and ran from top to bottom. These fibers cause the increase in the length of the organ, while the secondary fibers originate from the secondary meristematic tissues which are the cambium. These are located mainly in the lower part of the stem, and these are responsible for the increase in the width of the organ. In the process of fiber elongation, fiber elongates in length by 100 folds from 30 micrometers to several centimeters, while increase in width is in 10 folds from 3 to 5 micrometers to 30 to 50 micrometers. So we have a more increase in the length of the fibers. In the last, we have the cell wall thickening. The cell wall reaches the maximum thickness of 13 micrometers. It is an important factor in determining the strength of the fiber. Fiber porosity, which is the ratio of cell wall thickness to the lumen diameter, is an important factor in determining the mechanical properties of the fiber. Sir, my name is Emmanuel and my roll number is 182. I am a student of FM3. Here we represent the physical properties of comparison with other fibers. First of all, I tell you about bamboo fiber. बम्बू फाइबर जो से इसके सर हम अगर ड्राई टेंसाइल की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ जो सी होती है वो 2.33 होती है. उसके अलावा इसकी वेट टेंसाइल जो सी होती है वो CN/dt में उसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास 1.37 के लिहाज से आती है. और इसकी ड्राई एलोंगेशन की बात करें तो एट द ब्रेक जाके हो जाती है 23.8%.
उसके साथ साथ ही जो सी इसकी लीनियर डेंसिटी है वो भी हमारे साथ परसेंटेज ऑफ डेविएशन को जो करते हैं वो 1.8% की हो जाती है। दैन हम अगर इसके साथ साथ हम कॉटन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते जाएँ तो ये हो जाती है लॉन्ग लेंथ होती है, इसको टीस्टम में ईजिली कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ जो सी है वो कंपेयर करें तो ज़्यादा होती है। दैन इसकी इलास्टिसिटी जो सी होती है नेचुरली वाइज वो बहुत ज़्यादा होती है। और नेचुरल जो सी इलास्टिसिटी होती है वो इसकी कम होती है। दैन हम इसकी रेजिलेंस की बात और रिकलेंस की बात करें तो वो बहुत इजीली हो जाती है और इसकी जो सी ड्रेपेबिलिटी होती है वो बहुत लेस होती है। उसके साथ हम नायलॉन की बात करें, नायलॉन में जो सी स्ट्रेंथ होती है वो 920 MPa के बराबर होती है और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो सी होती है वो 27 MPa होती है। दैन इसकी अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो GM/cm की बात करें तो वो 1.10 हो जाती है। और इसके साथ साथ इसकी डेंसिटी भी जो सी होती है वो 4.5 होती है। पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर में डेंसिटी जो सी होती है वो 7 ग्राम और डेन हो जाती है। इलोंगेशन जो सी होती है 15 to 13% होती है। उसके बाद इलास्टिसिटी भी इसकी गुड हो जाती है। दैन मॉइस्चर जो सा रिगेन किया जाता है तो वो 0.40% होता है। जूट की ऐसे बात करें तो इसकी जो सी डेंसिटी होती है वो डेन होती है 3.45 से लेके 4.5 तक होती है एटलीस्ट। जो से इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 0.2 से लेके एटलीस्ट 30 तक होती है। स्ट्रेच जो सी एंड इलास्टिसिटी होती है वो नॉट इतनी इक्वल गुड नहीं होती पर इसकी लॉन्गेशन हो जाती है 2% तक। दैन रेजिलेंसी की बात करें तो वो इसकी इतनी गुड नहीं होती। और सेकंड स्लाइड इसकी अपना बम्बू में जो सी इसकी लेंथ होती है स्टेपल वाइज 0.2% के इक्वल होती है। ओवर कट जो सा हम फाइबर को करते हैं वो 6.2 जो से आ जाती है। दैन रेजिडुअल सफ़र की बात करें तो वो भी हमारे पास 100 mg ओवर 100 ग्राम में आ जाता है 9.2 के एटलीस्ट। और डिफेक्ट mg में बात करें तो वो हमारे पास 6.4 होता है। ऐसे इसके साथ साथ ये मॉइस्चर रिगेन भी होता है जो 13.03% देता है। कॉटन में जो सी होती है हम हाई डिग्री और हाई कंडक्टिविटी यूज़ करते होते हैं। ये समर सीज़न के लिए कॉटन हमारे लिए बेस्ट चीज़ होती है। इसकी ऑब्जर्वेंस जैसे कि पसीना आ जाए उसको स्वेट ऑब्जॉर्व करने की ताकत अच्छी होती है। उसके बाद ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथ अदर्स फाइबर के ज़रिए ज़्यादा होती है। नायलॉन की बात करें तो इसकी डेंसिटी जो सी होती है ग्राम और डेन जो सी होती है वो 6 आ जाती है। यंग मॉडल जो सी MPa में उसका देखें तो 5170 आ जाता है। उसके अलावा अल्टीमेट इलोंगेशन की बात करें तो 60.20% की बात करते हैं। उसके बाद इसमें रेजिलेंस जो सी होती है वो एक्सीलेंट होती है। दैन डायमेंशन ऑफ स्टेबिलिटी वो इतनी गुड होती है। दैन पॉलिएस्टर की बात करें, पॉलिएस्टर भी हमारे पास ग्रेविटी दी शो करवा रही होती है 1.38 की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 250 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और जो सी वॉल्यूमेट्रिक होती है स्वेलिंग वो नन होती है। कलर इसका वाइट हो जाता है और लेचर ब्राइट हो जाता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी सर जूट के इसकी एब्रेशन जो सी होती है रेजिस्टेंस वो होती है एक तरह से अच्छी हो जाती है। दैन डायमेंशन जो सी होती है स्टेबिलिटी होती है वो भी इसकी गुड होती है। दैन मॉइस्चर रिगेन जो सी होती है वो 13.75% के करीब होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो 1.48 से लेकर 1.50 तक होती है। We'll discuss the chemical properties of bamboo, cotton, nylon, polyester और jute की। दैन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलुलोज की बात करेंगे। ये तो 40 से 50% तक होता है। हेमीसेलुलोज जो हेमीसेलुलोज होता है वो 20 से 25% होता है। लिग्निन सेलुलोज जो होता है वो 20 से 30% होता है। और इसके एक्सट्रैक्टिव जो से आ जाती हैं वो चीज़ें आ जाती हैं वो 2.5 से 5% तक होती है। कॉटन में जो सी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में जो सी इसकी प्रिवेंटिव पावर होती है वो बहुत गुड होती है। अल्कली जो से होते हैं वो डैमेज नहीं कर सकते फाइबर को। जो उस पर ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो हमारे फाइबर को ज़रूर डैमेज करेगा। सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं वो इसमें मेन पार्ट किरदार अदा करते हैं कि फ़ाइबर को डैमेज करने के लिए। नायलॉन की बात करते चलें तो नायलॉन जो सी होती है उसकी एसिड कॉन्सेंट्रेशन जो सी होती है वो बिल्कुल पुअर होती है। डाइल्यूट एसिड भी बिल्कुल पुअर होता है। अगर अल्कोहल की बात करते चलें तो वो गुड होता है उसमें, तो उसकी एक अच्छी मिकदार यूज़ की जाती है। अल्कलीज भी एक फेयर से लेके गुड तक के मिकदार में एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे लिए साबित होता है। उसके अलावा पॉलिएस्टर की बात करते हैं, जैसे पॉलिएस्टर वो इफेक्ट नहीं करती पाए रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट के ज़रिए जो सी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हॉट कॉन्सेंट्रेटिंग के ज़रिए। और डाइल्यूट एसिड भी उनको हार्म नहीं करता। पॉलिएस्टर को स्ट्रॉन्ग जो सी अल्कली होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है फाइबर और स्ट्रेंथ के जब वो रिड्यूस करती है साथ। दैन हम जूट की बात करें तो जो सा जूट है वो इजीली डैमेज हो जाता है बाय हॉट एंड कोल्ड
कंसनट्रेशन एसिड के ज़रिए और इफेक्ट नहीं करता बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट्स के ज़रिए। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें रेजिस्टेंट की, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होती है और गुड ये होती है एफिनिटी टू बेसिक डाई, और इससे हम अच्छी एक डाई का प्रोसीजर कर सकते हैं। इस तरह अगर हम फोर्सलाइट की बात करते चले तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मकदार जो होती है 4.43% होती है पंपों में। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है 1.01% की होती है, पोटेशियम ऑक्साइड 3.09% होती है। दैन एलिमेंट डाइऑक्साइड जो सी होती है वो 4.96% होती है। सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो सी होती है वो 78% हो जाती है। उसके बाद कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है हमारे पास वो वीक एसिड होता है जो डैमेज नहीं कर सकता हमारे फाइबर को, और ब्लीचिंग भी नहीं हमारे डैमेज फाइबर को मैं को वो करती डैमेज करती। जो सी कॉटन ही जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी सेलुलोज में। नायलॉन की बात करें तो ये एरोमेटिक जैसे इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं वो गुड होते हैं। ग्रीस और जो से ऑयल होता है वो भी गुड होता है। उसके बाद हाइड्रोजनेटेड एंड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो गुड और पावर दोनों में दरमियान में रहते हैं। दैन हेलोजन जो होते हैं वो उसकी मकदार बहुत पुअर होती है, तो उसके बाद मकदार भी बहुत पुअर होती है। उसके अलावा पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर और जो सा रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बेटर देन होता है ये कॉटन से और लिनन के से बहुत बेहतर होता है। इसकी रेजिस्टेंट भी बहुत गुड होती है और ये माउंट वेट होता है। दैन जूट की बात करें, जूट जो है ये इसकी जो सी रेजिस्टेंस लिग्निन होता है ये जो सा डैमेज हो जाता है जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, जो सी फर्मेबिलिटी होती है वो जो सी इसकी रिड्यूस हो जाती है बाय बोरास और बोरिक एसिड के ज़रिए। दैन मोर रेजिस्टेंट जो सामग्री इसकी बात करिए तो ये टैग किया जा सकता है माइक्रोबायोलॉजी के ज़रिए। Bamboo find a variety of applications due to its certain properties such as growth, as it is the fastest growing plant in the world and it can increase in height of 120 centimeter per day, while it is also eco-friendly as we doesn't need any fertilizer or pesticides in its growth stages, and it is also 100% biodegradable and has a minimum impact on our environment. Made by is durable and can wear the wear and tear of motion, while it also have a good moisture absorption, so it does not form a layer of the sweat which irritates, and due to its hypoallergenic properties it is used for the patients with sensitive skin so it does not irritate them, while it is also have a good feel which is kind of silky and luxurious. It is also breathable and thermoregulating, so it makes our body cells to breathe, while in terms of thermoregulating it keeps the body warm in winter and cool in summer. As an other benefit, it blocks the UV radiations which can cause cancer. In terms of home textile, bamboo is used in the making of pillows and the bed sheets, as this item needed the strength and elasticity and softness which is provided by the bamboo fabric. It is also used in towels, as a bamboo fabric has a great moisture absorption capability, and these towels are only need to touch the moist area and absorb the moisture, while unlike cotton they doesn't need to rub on the surface. These fibers are also used in the formation of the blanket, as it gives the warmth while also giving the softness and the ability to absorb the sweat, so it doesn't irritate. Decoration, bamboo finds in application in sofa covers, TV covers, wallpapers, curtains. Due to its property of antibiosis UV protection, it is used in making of wallpapers, so it can block harmful UV radiation, while it has another property which is that it doesn't get